So welcome, Dr. R.S. Chandel. So friends, since morning we are discussing about the different aspects of natural farming in terms of understanding the concept. But it's also important to understand when you are speaking about a concept like natural farming in terms of practice, because there are, as you understand, in India, there are so many states, or maybe for that matter, I think in almost all the states you will find implementation of natural farming. It may be a question of scale of implementation only. In some of the states, you will find that still they are just introducing the concept. In some of the states, they have made a reasonable progress, and Himachal Pradesh is one of those states which have made reasonable progress in terms of bringing area under natural farming. And to as since morning we are discussing that you have to create awareness, you have to speak with farmers. So you need focused approach to help farmer get converted from means one type of practices to another type of practices that we conceive under natural farming. State government of Himachal Pradesh has created under Department of Agriculture one is special is state project implementation unit to project to promote natural farming, and this unit is headed by Dr. R.S. Chandel. He is executive director and has the SP Natural Farming unit established under Department of Agriculture. And we have invited Chandel Saab to share his experience, because since morning, as I mentioned, we are speaking about the concept, basic under we are speaking about something like natural farming and concept like organic farming. But we invited him to share his experience in terms of implementation, how it's getting implemented in Himachal Pradesh, what are the challenges they faced initial on, and what kind of success they have achieved. Namaskar, Chandel Saab. Welcome to this 5-day training program on natural farming. I would like to convey my thanks to the manage for taking this huge task to carry forward the process, the concept, the practice of natural farming up to the panchayat level through panchayat pradhans. And I'm also very happy that the manage was so quick, so swift in undertaking this plan. I think today most of the trainer farmers, they are either farmers or the extension functionaries who are directly working with the farmers. So I have prepared my presentation in Hindi and I would like to speak in Hindi. In between, if there are some queries, I would also like to explain in English, but I would focus to speak in Hindi, considering the requirement of the trainer farmers. As Shailendra has already explained, the state government under the Department of Agriculture has initiated a new scheme, Prakriti Kheti Khushal Kisan Yojana. This scheme was initiated in 2018 after the inception of the new government, and the sole purpose was to double farmer income or enhance farmer income through adoption of zero budget natural farming, or also in Himachal we call it as a Subhash Palekar natural farming. So this is a new baby. I would say still we have to complete 4 years of its inception. जो हमारा ट्रेनर फार्मर है, he must understand basically क्यों जरूरत है प्राकृतिक खेती की. Raman, you have already explained that there should not be any confusion about the ill effects of the chemical farming. Chemical farming ने हमारे साथ क्या क्या किया है, हमारे small holder की क्या position हो गई है. Most of our small holders, they are shifting to the cities in search of small jobs, but not preferring to stay on their farms for the reasons. वो हम सबके सामने है. Global warming एक बहुत बड़ा issue है. There was one statement during 2014 में United Nations एक statement आया था that if the same practices, agriculture practices continue, we are left only with 60 harvest years. हमारे पास 60 वर्ष बचे हैं
अगर यही केमिकल प्रैक्टिस चलती रही। फूड पॉइजनिंग, दिस इज ए कॉमन टॉक नाउ। हमारे पास रेसिड्यू बढ़ रहा है, 3.4% के आसपास हिमाचल प्रदेश का डेटा है। 2.5% तक हम कंट्री में हमारा जो सैंपलिंग हो रही है उसमें हमारा रेजिड्यू, अब मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट आ रहा है। एग्रेरियन स्ट्रेस, एवरीबॉडी नोज इट। फार्मर, in spite of the big data of increase in yield, productivity, फार्मर छोड़ रहा है। और पिछले 2 डिकेड्स में लगभग 28-30% फार्मर खेती छोड़ चुका है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ी है, डेट बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश ने जून 2018 से ये शुरू की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, और पालेकर जी की विधि को, जिसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को कहते हैं, इस विधि से हमने काम करना शुरू किया। और आज स्टेट में वी हैव टोटल 3615 पंचायत, and we have covered around 99% of the panchayat. That means in around 99% of panchayat we have a model of SPNF. We have the data with us which show that cost of cultivation has been reduced in almost all cropping systems, whether it is apple cropping system or other fruit cropping system or cereals or vegetable based. Soil has become more pulverized. You know, in Himachal, we have around 81% of the land which is which do not get the irrigation, which is rain fed. And you see, my this third bullet is Jai Vivithita. Now people who are transforming to natural farming practices, they are turning their fields from monoculture to have 3, 4, 5, up to 15 types of crops at a time. And here you see from length to width, from one district to the another district which is adjoining to China, and from Chamba to Kinnaur, all districts have now natural farming models. क्योंकि ये ट्रेनर्स के लिए है, दिस प्रोग्राम इज फॉर द ट्रेनर, जिनको लोगों को पढ़ाना है, जिनको प्रधानों को सिखाना है, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू टीच, टू ट्रेन प्रधान, टू सेंसिटाइज प्रधान। So they must understand that basically जब इस खेती विधि को शुरू करेंगे उनको 4 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, which are known as 4 chakras, 4 principles of सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती. First one is बीजामृत, second is जीवामृत, थर्ड इज आच्छादन, फोर्थ इज वापसा. बीजामृत एक देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से बना घोल है जिससे बीज का उपचार करते हैं. ये बीज की जर्मिनेशन पोटेंशियल को बढ़ाता है, ये बीज जनित जितने रोग हैं उनसे बीजों को बचाता है. ऐसे जो जीवामृत है ये भी देसी गाय के गोबर गोमूत्र और कुछ जो स्थानीय जो इनपुट्स हैं, आदान है, उनसे बनता है. ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का एक सबसे अच्छा, जैसा इसका नाम है जीवामृत, इट अलाइंस टू इट्स नेम, ये सबसे उत्तम साधन है जो जमीन की उर्वरता को बढ़ाता है. ये एज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काम करता है, ये आज ए फंजीसाइड काम करता है. तीसरा है आच्छादन, दिस इज मल्चिंग. मल्चिंग हैज मल्टीपल एडवांटेजेस. mulch prevents the water evaporation from the moisture evaporation from the soil. Mulch attracts the water from the atmosphere. Mulch allows a condition in the soil which maintains the temperature between 28 to 32 degrees centigrade. It enhances the activity of the local earthworm, and finally at the end of the season, after the end of the season, it turns into the organic carbon of the soil. So it has multiple advantages. And last one is the vapsa. This is a very different kind of situation. The first 3 were the inputs,
फोर्थ वन इज द सिचुएशन, ये चौथी स्थिति है जो हम खेत में, जो हम ऑर्चर्ड में क्रिएट करते हैं. दिस इज द क्रिएशन ऑफ ए सिचुएशन वेयर वी ट्राई टू मेंटेन द मॉइस्चर एंड एयर इन द रेशियो ऑफ 50-50. इसका मतलब है 50% वाटर वेपर्स होने चाहिए जमीन में और 50% हवा होनी चाहिए. जो बीजामृत जीवामृत है, ये सूक्ष्म जीवाणुओं का एक भंडार है. इज द स्टॉक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये जमीन में सूक्ष्म जीवों की, माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ाता है. जो अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. इस विधि में सारी की सारी जमीन को ढकना होता है, चाहे कास्ट आच्छादन से करें, क्रॉप रेजिड्यू से करें, या लाइव आच्छादन भी इसमें एक नई विधि है. हम इसमें डाइकॉट लगाते हैं, जितनी भी दाल वाली फसलें हैं उससे भूमि को कवर कर देते हैं. और जो दाल वाली फसलें हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को खींचती हैं एंड ऐड टू द सॉइल. इट मींस ऑल न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन द सॉइल एक्सेप्ट नाइट्रोजन, where we add nitrogen through the cultivation of short rotation लेगुमिनस क्रॉप्स. दालों की फसलों को लगा के हम नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करते हैं. आच्छादन से भूमि में वायु और नमी को बरकरार रखते हैं. इतना भी सूखा पड़ा होगा, अगर आच्छादन हुआ है तो उसके भूमि बरकरार रहती है. अब इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा. अभी जय राघवेंद्र साहब का एक वर्जन था कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं, दे नेवर ऐड और दे रेयरली ऐड द रिक्वायर्ड नाइट्रोजन कंटेंट टू द सॉइल. वी नेवर से they add the required, they supplement the nitrogen in the required number, but there must be some activities in the soil. भूमि में कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं, प्रक्रियाएं आरंभ होना शुरू करती हैं which cannot be taken in the mathematical terms. Here we cannot say that if we add this amount of the nitrogen in the form of whether CN or CAN or urea, so where from these are coming. जब हम 4 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं भूमि में, तो एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को सिनर्जाइज करता है. जब दोनों प्रिंसिपल्स मिलते हैं, तीसरे की शक्ति और बढ़ती है. Here 1 + 1 will not be 2, 1 + 1 will be 4. And when all the principles are applied in the crop cultivation, they create all conditions, all favorable conditions which are required for a healthy plant. वो सभी स्थितियां भूमि में बनना शुरू हो जाती हैं जो पौधे की अपनी वृद्धि के लिए, पौधे की सेहत के लिए, प्रोडक्शन के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए आवश्यक है. इसमें लागत कम होती है, पैदावार घटेगी नहीं. जैसा बीच में एक कमेंट में मैं पढ़ रहा था, किसी का, he said that even in case of organic farming, it's not in the first year that you will find the enhanced productivity. But in case of natural farming, अगर किसान सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो एटलीस्ट फसल कम नहीं होगी. दिस इज ए रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर. ये भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाकर रखती है और एक फसल के बाद दूसरी फसल में उर्वरा को ट्रांसफर करती है. पानी की बहुत कम जरूरत इसमें पड़ती है. When we talk about the आच्छादन, हम सॉइल सरफेस को कवर कर देते हैं और मॉइस्चर को 50% की रेशियो में मेंटेन करते हैं, तो पानी की आवश्यकता बहुत कम भूमि में पड़ती है. और दिस इज द क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर. जैसी जैसी चुनौतियां हमारी बढ़ रही हैं बदलते मौसम के कारण, उन चुनौतियों में बेहतर मुकाबला ही करती है. मैं छोटे छोटे कुछ फोटोग्राफ्स बताऊंगा कैसे बीजामृत को हमारा पीपल, अवर वीमेन, अवर मेन, दे ट्रीट दिस द सीड्स which they sow as intercrops at community level, at individual level. How they, here you can see in the slide 2, how they treat these seedlings with the Bijamrit, with the Jivamrit. This is Jivamrit.
So because our farming situations are different from other states, we have the hill terrain. Our land holdings are very small. But here you see how from a small channel of water, the farmer is adding simply a bucket of Jivamrit. This Jivamrit, it acts as a culture. The growing water, it will spread through the farm and will enhance the microbial activity of the soil. You see in case of high density apple, how Jivamrit are being applied. This is the common practice with the farmers of the plain area. With the channel water, they add Jivamrit drop by drop. So even the small drops, they add the value to the water, and when this water enters in the field, it tries to enhance the microbial population of the soil. This is the solid form of Jivamrit, Kanjivamrit. We can store it for 6 months. Practice is same. It requires only Gomutra, काउ डंग, गोबर, गोमूत्र, बड़ी थोड़ी मात्रा में गुड़, बहुत थोड़ी मात्रा में कोई दाल काटा और अनडिस्टर्ब सॉइल, ए पिंच ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल. ये 4-5 चीजों से जीवामृत घन जीवामृत बनता है. सो दिस इज द सॉलिड फॉर्म. यू सी आच्छादन. First slide shows how the live mulch. You can see the number of crops per unit area. One crop, second, third, fourth, and this crop is the source of nitrogen. This is the मेथी. मेथी नाइट्रोजन ऐड करेगी. मेथी ने सारा सरफेस को कवर कर लिया. एंड फार्मर्स दे आर एनहांसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ farm and rhizosphere. You see mulch, one crop, second crop, and here this is another farm of high density apple. So you see how maculatively the farmer has raised the bean crop. Bean is the source of nitrogen. This is the achhadan. Achhadan adds number of attributes to the soil, and you see good crop in the high density apple. This is the Vapsa. Yes, this is the situation here. Here you see, here the farmer has created the Vapsa line. It is the 9-inch deep row, which he has filled with the dry mulch. When during the rain, the excess water of this bed will come in this bench. And in case of in dry season, the moisture of this trench will enter inside with the capillary. So this is the principle of the Vapsa. Here you see, this lady is adding Jivamrit not to the roots, but at a distance, so that the Jivamrit will go to the roots with capillary action, and the roots will try to come out in search of water. So the point where they will meet, that will fulfill the requirement of the plant. So ये concept, जीवामृत डिस्टेंस पे देना पानी की, और इसके बाद इसको मल्च से बंद कर देना है, so that it should not evaporate from the soil. और इसके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं. पहला सिद्धांत ये कहता है कि गोबर की एक ही गाय के गोबर गोमूत्र से 30 एकड़ की भूमि पे प्राकृतिक खेती की जा सकती है. बहुत सी इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी आती हैं, बट दिस इज एन आइडियल सिचुएशन. जब हम 4 साल 5 साल से लगातार प्राकृतिक खेती करते हैं, तो हमारी जो सॉइल की उर्वरा है वो बढ़ जाती है, सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है. सॉइल में जो क्रॉप इकोसिस्टम में पेस्ट आता है, डिजीज आती है, ड्यू टू मल्टीपल क्रॉप्स दे क्रिएट बैरियर्स, उनका कल्चर घटता है. तो 4 साल 5 साल के बाद हमें इनपुट देने की कम जरूरत पड़ती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट नथिंग इज टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट. बाजार से कुछ भी नहीं लेना. For example, in case of my state, neem is available only in the adjoining districts, which are near to Haryana, Punjab. But rest of the Himachal does not have the this neem plantation. So this concept says that any plant
on and around our farm, which is not being eaten by the cow, acts as a botanical. So we can take any plant around our farm to prepare different inputs. You see, we will have to add one dicot, one leguminous crop with the main crop. किसी भी मेन फसल के साथ एक डाइकॉट की फसल जरूर लेनी है जो साथ में दलहन को और नाइट्रोजन सप्लाई करे। और जितना भी इनपुट बनती हैं, पीपल farmers prepare those all inputs on their farms or around their farm. बाजार से कुछ भी नहीं लेना। हिमाचल में जैसा लगता है कि हिमाचल में प्राकृतिक खेती में we have taken a lead, having a significant number of successful farmers. So we have adopted the 5-tier model for spearheading this movement. पहला था sensitization. We started from sensitization. We understood the fact that this sensitization will not add much value to our program, but at least these sensitization programs helped us in taking us away from the controversies, criticism. At least people could understand what is zero budget farming, who has propounded this methodology. Then second most important part of our program is we impart all trainings on farm. No training is organized within an institution or within the 4 walls. All trainings, each training is well structured. For 2 days, each farmer has to sit for 14 hours, 15 hours, and we do not select more than 30 farmers per training. And immediately after providing them training, we take these farmers to another model, established model, where the officials come on the back here and we encourage the discussion of the farmers with the owner of the model farm. So here the farmer explains the challenges, the success, how he initiated, what's the impact on the production, productivity, water requirement. So here we found that this discussion becomes more important than training by an extension officer. This discussion is more important, more effective, more motivating. And immediately after this, we allow the farmers to start natural farming on a piece of land, not on whole land. Even we encourage him to start from a kitchen garden. If he is convinced, not more than 1/4 of an acre, and allow him to compare the results of his practices with his conventional practices. And finally, our extension officers continue to guide, they continue to visit the farmers who are the new transformers. They continue to guide them, continue to visit them. This is our 5-year action plan. As of now, we have over 1.7 lakh farmers who have transformed to natural farming practices. Around 99% of the panchayats have been covered. Honorable Prime Minister has on 27th of December, he spoke from the in Himachal Pradesh that he emphasized that every panchayat should have at least one model. So we can say now that within next a couple of days or a couple of months, we would be able to cover all the panchayats. But now here you see, we have around 9,500 hectares of land. So this variation is very interesting. Here मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिफरेंस को जरूर देखें। अर्बन हमारे पास 1,71,000 है, यह बहुत कम है। So this raises a question to everybody almost. Why area is so small? So my answer for this query would be that we focused initially on the outscaling. Our focus for the first 3 years was to train farmer,
motivate farmer and transform him from a small piece of land and handhold him continuously till he raises a good model, farm model. So that's why the area was much less. But now I think we are waiting for the now current data from the field. Hopefully it is 12,000 hectares. So these are some of the internal studies we have conducted after the completion of the 2 years here. आप देखिए सेब में हमने 56% खर्च कम किया है बिकॉज उसको पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं खरीदना है. हिमाचल में 12, 13, 14 स्प्रे पेस्टिसाइड फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के किसान स्प्रे करता है. गेहूं में 28% कम हुआ खर्चा और जहां कॉम्बिनेशन है वो आज 46% तक फल दालें सब्जियां ये लागत में कमी आई है. एंड इफ यू लुक एट द increase in net income, it's around 27% in apple, 64% in wheat based farming system, and it's around only 12% initially. Then another success we could fetch out from this farming system is the farmer is slowly now shifting from the monoculture to multi-crops. And you must understand that intensive crop intensification is the priority of the FAO. FAO has urged all the countries to focus on the sustainable crop intensification, which would be the only sustainable method to strengthen, to upskill the smallholders. तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक से किसान भी है जिनके पास 15 तक फसलें एक साथ उगाई जा रही. अब मैं दो चीजों पे इस पे बोलना चाहता हूं. जब हम इंटरक्रॉप्स लगाते हैं, we not only enhance the scope of the marketable produce, but we create the internal barriers which check the insects, diseases from spreading out. This enhances, this triggers the soil microbes to act more swiftly. Here you see, because our state is the focus of my state is to grow the cash crops. Apple and oxygen vegetables are the main crops being grown by the farmers. So that's why more insects, pests, diseases, this problem is more severe in hills than in plains. But our management practices, our farmers could manage better the diseases, agriculture crops, and they have perceived that their crop have raised, उनकी फसलों में सूखे के टाइम खड़ा रहने की क्षमता बढ़ी है, इसका स्वाद बढ़ा है, गुणवत्ता भी बढ़ी है. ये उनको जो फीडबैक मिला है उनके कस्टमर से मिला है. अभी हिमाचल प्रदेश में जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो सब फार्मिंग सिस्टम पे एस्टेब्लिश हो चुका है. यू टॉक ऑफ एनी क्रॉपिंग सिस्टम, we can convincingly say that all cropping systems, सब फसलें बना लिया सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के माध्यम से होना उसी यील्ड के साथ या बड़ी हुई यील्ड के साथ संभव है. अब सर्टिफिकेशन की बात आई थी. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स ये पहाड़ी राज्यों को, पहाड़ी देशों को सूट नहीं करता. हम लोगों ने इसको एक अलग सर्टिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया जो पीजीएस के साथ अलाइन करता है और इसमें किसान खुद ऐप के माध्यम से अपना डाटा भरेगा और साल दर साल उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा. साल दर साल सिस्टम बेस्ड उसका प्रमाणीकरण होना शुरू हो जाएगा. 3 महीने में हम इसका पायलट तैयार कर लें. एक और ढांचा हमने तैयार किया कि अब प्रोडक्शन सिस्टम जब हमारा एस्टेब्लिश हो गया तो हमारा जो फूड खेत में तैयार वो कंज्यूमर के प्लेट तक कैसे एक सिस्टम से जाए. जिस सस्टेनेबल फूड सिस्टम को एफएओ एनविजन करता है
उस सिस्टम से कैसे हम बात करें। जैसे मैंने अभी बात की, अभी मिस्टर जय राघवेंद्र जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं प्रीमियम प्राइस तो मिल रहा है, बट मैं बड़ा एम्पैथेटिकली कहूंगा कि वी डू नॉट नीड प्रीमियम प्राइस। मैं इसको दोबारा अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, आवर फार्मर्स डू नॉट नीड प्रीमियम प्राइस, दे नीड ट्रू वैल्यू, दे नीड ट्रू वैल्यू ऑफ देयर क्रॉप्स। तो इस तरह से जो एफएओ ने इसको एनविजन किया है, हम उस तरीके से एक ढांचा तैयार कर रहे हैं जहां फार्मर को ट्रांसपेरेंसी से पैसा मिले, कंज्यूमर को बैक ट्रेसेबिलिटी मिले, मेरा प्रोडक्ट कहां से आया, और फार्मर को ट्रू कॉस्टिंग हो। ये सिस्टम हमने तैयार कर दिया, अभी पायलट इस पे कर रहे हैं। साप्ताहिक मंडी, अपनी लोकल मंडी, कैनोपीज, ये काम शुरू हो गया है। हम लोगों ने एक चीज और कोविड के टाइम में एक्सपीरियंस किया कि किसान को बाहर की मंडी देखने की इतनी जरूरत नहीं है, उसको अपने आसपास की उसमें इतनी मंडी अवेलेबल है। तो आज लगभग 40% तक हमारा किसान जो लोकल बेच रहा है। प्राकृतिक खेती में हिमाचल का किसान जो कन्वर्ट हुआ, उसने बाजार से सब कुछ लेना बंद कर दिया है एक्सेप्ट सीड, क्योंकि सीड पे अभी उसकी डिपेंडेंसी मार्केट पे है। तो आने वाले टाइम में 2-3 वर्षों में हमने वी आर वर्किंग ऑन ए डेवलप्ड ए ह्यूज प्लान टू क्रिएट द farmers who will develop the seeds of the local varieties, traditional varieties. जितना भी हम काम कर रहे हैं, फार्मर है, फार्मर का डेटा है, फार्मर की सक्सेस स्टोरी है, हम लगातार नीति आयोग के साथ, मिनिस्ट्री के साथ उसको साझा कर रहे हैं, फार्मर के डिटेल के साथ, कॉन्टेक्ट नंबर के साथ इसको साझा कर रहे हैं। ऐसी लगभग सैकड़ों स्टोरीज डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल में तैयार हुई हैं। 20 फार्मर की, 25 फार्मर की, 30 फार्मर्स की, इनके पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स के साथ ये किसानों का हम शेयर कर रहे हैं। तो मैं जो ट्रेनर फार्मर है, इनको आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2 चीजों पर ध्यान करें। पहला, हमें जरूरत क्यों है, और दूसरा कि जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल ऐसे नहीं काम करेंगे कि कभी एक खाद दे दी, दूसरी मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, एक पेस्टिसाइड दे दिया, दूसरा नहीं दिया। ये चारों प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे, ये आपको चारों समझने पड़ेंगे। जब चारों इकट्ठे चलेंगे तो मैं गारंटी के साथ आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके किसान का हौसला और मोटिवेशन बढ़ेगी। और लास्ट में आप कोशिश जरूर करें कि आप जब इनको पढ़ाने लगेंगे, इनको सिखाने लगेंगे, अपने आसपास हिमाचल प्रदेश के तो मैं 160-170 लोगों की जो लिस्ट गई है उनके लिए तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, बट बाकियों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मॉडल फार्म जरूर दें। जिस फार्मर ने नेचुरल फार्मिंग मॉडल क्रिएट किया, उस फार्मर को उसमें विजिट करें, उससे डिस्कस करें, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेगा। सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे लोगों के उस पे कॉन्ट्राडिक्शन पे हम लोग डिस्करेज ना हो। वी आर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ एडवांटेजेस, नंबर ऑफ social ecological benefits also to our environment, to our family, to our society. Thank you very much. This is all from my side. Yeah, thank you very much, sir. So Chandel sir mentioned about the basic principles when you are speaking about natural farming. He also shared the progress of natural farming in the state of Himachal Pradesh. Also, he spoke about the strategy followed by the government of Himachal Pradesh Department of Agriculture in promoting natural farming. And as we were discussing in the morning session also, it has to be a gradual process, because you are expecting farmer to shift from one type of practices to another. So it has to be a gradual process, and that's why Chandel sir mentioned that they have taken a time period of 5 years, which will include awareness, training on field, and gradually farmer will shift from their conventional agriculture to natural farming. And he also shared that during these years of implementation, they have documented so many success stories, and many times it happens when we have to create awareness, motivate farmers. These success stories helps a lot. So thank you very much, sir, for your time and sharing with our participants. I'm having one question, means that you have to use
cow dung and cow mutra for preparing some of the inputs. So it is mandatory that if you are using anything other than cow, it will not be considered as natural farming, because in morning session we were discussing that some kind of flexibility can be what means availed, you can say. Yes, yeah. Shalendra, this is a very, I think, relevant question. We are nobody to put the farmer in a particular framework. Farmer is an independent entity. So based on the Palekar principle and some initial studies, the dung of the cow of indigenous base, it carries highest number of the microbes. So that's why we recommend to use the cow urine and dung. But at the same time, we do not force the farmer, if he has the buffalo, if he has the bull or goat, that sell his own animals and buy a new cow. So this is not possible for the farmer. It's the farmer, because once the farmer will understand that which dung or urine of which animal is better, he will do it. If he finds that the dung and urine of buffalo is not so efficient, so he will enhance the volume also of urine of Jivamrit, Ganjivamrit. He will enhance the percentage. For example, in case of Jivamrit, we say that use 10%. So he can use 20%, 25%. So because this is a knowledge intensive system, so it will go on building season after season, farmer with the farmers. So there is also one question that vermi compost or vermi wash is permissible. Also, yes, if farmer wants that, yes, he is getting better result than with vermi compost, vermi wash, no issue. Ultimate aim is to keep him away from the market forces. Yes, okay. नमस्कार चंदेल साहब. नमस्ते सर, नमस्ते. हाँ सर, आपने जो अभी प्रेजेंटेशन में बताया उसका तो मैं खुद ही प्रमाण हूँ, क्योंकि मैं काफी जगह हिमाचल में देख चुका हूँ ये होते हुए. तो सर मेरा एक बड़ा काफी बेसिक सा क्वेश्चन है. आपने जो बताया कि पीला रतुआ का आप प्राकृतिक तौर पे उसका मतलब प्रबंधन कर रहे हैं इसका, तो आप उसके बारे में बताएंगे? कैसे किया है? हेलो जी. हाँ कजारी साहब, ये कैसे हमने इसका प्रबंधन किया है? प्रबंधन किया आपने बताया ना कि आप पीला रतुआ का प्रबंधन करते हैं. जी जी बिल्कुल. हाँ हाँ, तो कैसे किया ये आप पूछना चाहते हैं? अगर आपके पास थोड़ी जानकारी होगी तो. हाँ हाँ हाँ, हमारे फार्मर्स को एक हमने सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया था कि जो पहला स्प्रे है जीवामृत का होगा, 15 डेज के बाद वो खट्टी लस्सी का स्प्रे करें, और 7 दिन के बाद फिर वो या तो खट्टी लस्सी और जीवामृत को मिक्स करें या जंगली कंडी का स्प्रे करें. ये हमने एक सेट पैकेज दे दिया था. पर जहां जहां पे फिर फार्मर्स का जो फीडबैक आया, जिस एरिया में इसका इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा था, बिकॉज योर फार्मर्स आर अलोन इन ए क्राउड, सो जहां पे सराउंडिंग की इन्फेस्टेशन ज्यादा थी, वहां फार्मर ने 10 दिन पे शुरू कर दिया, कुछ जगह पे 7 दिन को उसको करना पड़ा. ये जो मई एंड का, ये जो अप्रैल का महीना था. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस he did it very efficiently, and in 30%, 50% of the fields, we have less than 10% infestation. So the basic idea behind this was to just create a film on the upper surface of the leaf. Yeah. Basic was to create a film and which repel the development of Acrosoria. Yeah. Multiplication of the fungus. Yeah. By khatti lassi you mean fermented lassi? Fermented lassi. Yeah, that too of 10-15 days old, sir. And again, fermentation takes different time. Under normal conditions, from 30 to 35, 36 degrees centigrade, it gets fermented between 3 to 4 days. जब आपको ऊपर एक झाग बनना शुरू हो जाएगा इस पे,
जी It means this is now you can use it on the farm. And in Secondly, case sir, of in case of pahadi cow, when it is pahadi cow, we recommend only 3% या use of उसके fertilizer. कंटेंट काफी रहता है उसमें। हाँ. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you. Now, Anurag ji. Anurag ji is. Ji ma'am, good afternoon. Yeah, good afternoon. Actually, for all of the participants, good afternoon. I am from Image. I am working as assistant horticulture officer. I am new to the department, but as because I have completed my master's degree in horticulture, and also I have apt knowledge in organic farming. Basically, it's theoretical, not so much of practical knowledge. But while I tried my best in the villages of Odisha, where I was being posted initially, farmers are reluctant to use organic or natural farming because, as we know, first year it is definitely it is definite that the productivity and production will go lower. It is the first thing. That first time they will get lesser production and productivity because they are directly transforming from chemical fertilization to organic practices. So they are not at all motivated. So that I will try and make one model by taking one or two farmers initially. So how to motivate them regarding this? That is the main problem for me. As because we know I know that the pesticides, organic pesticides and organic fertilizers, while being applied, it is very much beneficial, and it also it is also being benefited. Means all the farmers get benefited while they use organic fertilizers and organic pesticides, but still they are reluctant to do so because of the only of productivity. Yeah. Oh, now Chandel sir. Anurag, again, this is a good question. My answer would be, we should not have difference between the preaching and the practice. What happens? We go to the farmers, we preach them, we teach them, and come back. So first focus would be to get convinced, then to raise them. Once you raise one model in a village, you need not to visit back to that village. After a year or two, you will find 3, 4, 5 farmers turning around into farming practices or organic farming. So generally, we do not follow this practice. So in Himachal, why we speak confidently? Because we have model. And we ask farmers not to preach it. Just focus on your, create your model, learn, go on learning. So I think this would be the best practice to transform a farmer, and transformation again takes long time. Don't think that it will come within 2 years, 3 years, 4 years. But if it is in the positive side, it will happen. It will have to happen. Oh, thank you, sir. And this only 2 persons. One is Suresh Gautam and Dr. J. Rao. Suresh Gautam ji, very crisp and small person, please. मुझे मेरा एक सवाल यह है कि अभी एग्जिस्टिंग फार्मिंग सिस्टम से हम लोग केमिकल फार्मिंग सिस्टम से हम लोग जो जैविक सिस्टम या नेचुरल फार्मिंग सिस्टम के तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये सभी प्रोसेस में सर्टिफिकेशन की सख्त जरूरत है या नहीं? इज देयर एन नेसेसिटी फॉर सर्टिफिकेशन फॉर how many years we have to raise a crop like that, and then when do we get certification? Is certification necessary first of all to change from the existing system to natural farming system? If we are following a strict certification system policy, I don't know how many people will join, but the question is, if we are a little relaxed about the certification system and then voluntarily motivate the farmers to convert some of their area into organic or natural farming area, then without certification, but with
definitely some standards. The standards have to be certified by somebody locally only. So, if we start a process without a very big certification process, instead of that, what is the system we have to follow? Is this certification absolutely Okay. necessary? But- Necessary is my first question, sir. So this is a very genuine question, and I think you speak from on behalf of my heart. Thank you, sir. There was a meeting day before yesterday when one officer of Government of India level, he said that yes, we should have very stringent conditions, otherwise people will not have the faith on the this nature farming produce. Then I said, sir, why we are so cruel to a farmer who has taken the challenge to mitigate the current challenges? We should be cruel to the farmers who are misusing the pesticides, who are using the pesticides which are not recommended, who are selling the pesticides which are not approved by the CIB. बट हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जिस किसान ने ये इतना मादा रखा, उसने ये रिस्क लिया, ये चैलेंज लिया कि अपने घर, और वो छोटा किसान है जिसकी घर इस खेती से चलता, उसने ये चैलेंज लिया कि मुझे पानी बचाना है, मुझे मिट्टी खेती बचानी है, हम उसके लिए क्रूअल हो रहे हैं? सर, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम लोगों ने जो हमने इसको चैलेंज किया है. We have put a big question mark on this certification system which was designed also for the organic farming. विदेश में बना हुआ 1970 के दशक का सिस्टम हिंदुस्तान में कैसे चलेगा, बड़ा कुछ प्रश्न है सर. और मेरे प्रदेश जैसे अन्य प्रदेश और देशों के लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है. इसलिए हमने इसको बनाया है. अभी इसको हम नीति के साथ अभी शेयर कर रहे हैं, नीति, और हम इसको होपफुली नेक्स्ट वीक हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं. इसमें किसान अपना डाटा खुद भरेगा ऐप पर. मैं जीवामृत किया, मैंने घन जीवामृत किया, मैंने ये किया, उसको नंबर मिलेगा उसका. उसमें सर उसको फिर अगर उसने कोई बाजार से खरीद लिया तो उसको उसका कम नंबर मिलेगा, बिकॉज अवर अल्टीमेट एम इज टू गेट रिड ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर्स मार्केट. उसने कोई केमिकल सप्लाई कर दिया, उसको माइनस मिल जाएगा. बेस्ड ऑन दैट होल डाटा जो सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरेट कर देगा, अंतराल किसान, साधारण किसान, विशिष्ट किसान. और उसका जो आपने, जैसे आपने कहा कि इसको जो इवैल्यूएशन लोकल लेवल पे हो, वो 5 किसानों पीयर फार्मर्स के साथ उसको अप्रूव करवाएगा, और जो लोकल हमारा एक्सटेंशन ऑफिसर है वो उसको वेरीफाई करेगा, और वहीं उसकी सर्टिफिकेशन जनरेट हो जाएगी. जो नेक्स्ट काम होगा वो उस विभाग का होगा, वो विभाग करेगा. फिर उसका 5% उसका जमीन का सैंपल लेना, उसके फ्रूट का सैंपल लेना, वो विभाग का काम. बट बिफोर दैट ही विल गेट द सर्टिफिकेशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, और उसको पैसा नहीं देना. ये सर हमने तैयार कर दिया है. होपफुली अभी आईफोम के अभी नेशनल जो सेंटर ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग है, उसके साथ भी एक मीटिंग हो चुका है. तो होपफुली विल कम विद दिस सक्सेस स्टोरी. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Chandel sir, your valuable input and the sharing of your experiences regarding Himachal, and continuously you are supporting for this program also since consultative meeting and earlier, and continuously we are bothering you. And team also already visited in your team is going to visit your place for study of this natural farming. Every time you are supporting a lot. Thank you, sir. Thank you so much. It's a pleasure, ma'am. It's a pleasure. Again, my thanks to manage and your team. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.